Hello, people. Welcome back to my channel, The Dream Crafter. So, recently I saw many people buying planner and reviewing that. I have gone crazy that I also want to do something like that because मुझे भी to do list बनाना अच्छा लगता है, मुझे भी ये सब करना बहुत पसंद है. But when I searched planners, I was literally shook. मिनिमम मुझे प्लानर के 800 to 1000 दिख रहे थे मिनिमम एंड मैक्सिमम तो पूछो ही मत. एंड आई वॉज लाइक डूड, आई कांट स्पेंड इतने पैसे इसमें. और उसमें भी प्लानर में बहुत कुछ ऐसे कॉलम्स थे जिसे मैं शायद ही यूज़ करती. देन आई थॉट वाई नॉट टू कस्टमाइज माई ओन प्लानर इन बजट. I bought this notebook which cost me 220 from local shop. This cover is quite sturdy लेकिन आप बाइंडिंग वाले भी ले सकते हो. Since I am a crafter, I own chart papers, glitter paper, markers, etc. which you can easily find anywhere. I'm going to use all these things to make my own planner. I have made some cutouts. उसमें कैलीग्राफी करके मुझे हेडर चाहिए थी, मैंने वो लिख लिया है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं मिलती हूँ प्लानर रेडी करके. A few moments later. My planner is ready and I'm here to show all of you what I made. Here I wrote perfectly planned 2021. Actually I saw this on Saloni Srivastava's planner and I found it very cute, so I wrote this. This is a scrapbook paper. आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो. Here I wrote this quote which says people who have goals succeed because they know where they are going. It's that simple. Here I mentioned this planner belongs to name, phone, email in case I lost this. Now here comes Good Boy 2020. यहाँ पे मैं 2020 के बारे में सारी चीज़ मेंशन क्या करूँगी. एंड इट इज़ Bonjour 2021. नाउ विजन बोर्ड. यहाँ पे आप अपने फोकस वाले चीज़ों पे आप यहाँ पे पिक्चर्स लगा सकते हो. आई विल स्टिक इन फ्यूचर. Now here comes self-care goals, career goals, health goals and finance goals. Habits I want to inculcate. Now it is year at a glance. I will draw emoticons of sad, happy, dull, boring, etc. every day, every month. Now it is a page for memories. I will stick pictures of my happy day life. This is a wish list. There are many things which I want and there is many things which I really need. I want to separate the products. Here I will write want and here I will write need. This is gratitude list. I am very happy for my life, so I will try to mention what I am grateful for. This is my gratitude list. Now here comes YouTube video ideas. This year I seriously wanna work on YouTube videos, so I will put here some ideas that I want to try on YouTube videos. Now 3-4 पेज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है. फिर आते हैं जॉयफुल जनवरी. Follow your dreams, believe in yourself and don't give up. I wrote this because this really motivates me. Now this is a calendar, January. Now here's a list of birthdays, month goals.
यहाँ पे मैं अपने मंथ गोल्स लिखा करूँगी एंड देयर इज़ अ टू डू लिस्ट फॉर द मंथ. नाउ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस and here is business expense list. I generally do some small business, so about this is a habit tracker. I really wanna inculcate some habits that I want to track also, so I will write here. Actually I will tick here if I do on that day or not. This is a water tracker and there is period dates. Can you see this little cute stickers? Has wrote fine little days. Now अब ये हमारे वीक के एक्चुअली मंथ के डेट शुरू हो जाते हैं. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8. इसे मैं फिर बाद में प्रोसीड करते जाऊंगी, जैसे 9, 10, 11, 12 ऑफ ऑल द डेट्स. नाउ एट द एंड ऑफ द मंथ आई हैव टू मेंशन what I am grateful for. This month I am grateful for good work done, mistakes of the month, hates, my goals which I hit, which I failed to succeed, carry forward. वैसे गोल्स जो मैंने फेल कर दिया और उसे मैं नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी करना चाहती हूँ. एंड लास्टली, डिड आई मेक इनफ टाइम टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द मंथ. हियर आई विल write yes or no. And I also made a cute bookmark for this diary. So here is my planner. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स फ्री. प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.